students of class 12, in determinants, I have discussed properties of determinant in our previous lectures and previous topic. Today, I will discuss the application of the determinant. Friends, in application of determinants, today I will discuss the area of the triangle by using determinant. Area of a triangle in determinant form. Let A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. These are the coordinate of the vertices of the triangle ABC. Then area of the triangle in determinant form. Area of triangle ABC in determinant form 1 by 2. In first column x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. आपको ध्यान देना है कि जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल रहे हैं तो पहले 1 by 2 इंटू जो डिटरमिनेंट में पहला कॉलम होगा उसमें x1, x2, x3 होगा, सेकंड कॉलम में y1, y2, y3 होगा और थर्ड कॉलम में 1, 1, 1 होगा. Friends, to calculate the area of the triangle, these 2 points should be remembered. The first point is, since area is a positive quantity, so we always take the absolute value of the determinant for the area. यानी अगर आप एरिया निकाल रहे हैं इस डिटरमिनेंट मेथड से तो एरिया चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए अगर निगेटिव आती है तो निगेटिव नहीं लेना, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट लेते हैं एरिया निकालने में. ये ध्यान रखना है. द सेकेंड पॉइंट इज, if the 3 points A, B, C are the collinear, then area of the triangle ABC must be 0. अगर 3 points A, B, C collinear है तो उनका एरिया जो होगा तीनों पॉइंट से जो डिटरमाइन होगा वो 0 के इक्वल होगा. We have taken a problem here. Find the area of the triangle whose vertices are capital A -2, -3, capital B 3, 2 and C point is -1, -8. As we have discussed, the area of the triangle 1 by 2 and in determinant, in first column we take x1, x2, x3, -2, 3, -1 and in second column y1, y2, y3, -3, 2, -8, 1, 1, 1. If we solve it 1 by 2, along first column we expand it, -2, leave out first column, first row, that is 2 plus 8 plus 3. Now leave out first row, second column, that is 3 plus 1 plus 1, leave out first row, third column, -24 plus 2. Now 1 by 2, this is 10, that is -20, 4 3s are 12 and this is -22. 1 by 2, -22, -20, -42 plus 12, 1 by 2 and this is -30, -15. As we have discussed already that area cannot be negative, since area is always positive, so we take it here absolute value, that is 15 square unit. एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट. I have taken another problem here. Let A 1, 3, B 0, 0 and C K, 0 be the 3 points such that area of triangle ABC is equal to 3 square unit. Find the value of K. Since area of triangle ABC is equal to 3 square unit, it is given that area of triangle is 3 square unit and you have to find out the value of K. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको एरिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया और आपको एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है K.
तो जब एरिया गिवन हो और इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि ये के की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है. As we have discussed that area of triangle is 1 by 2. In first column x1, x2, x3, that is 1, 0, k, and second column y1, y2, y3, 3, 0, 0, and in third column 1, 1, 1, that is plus minus 3. Now we can write it as 1, 3, 1, 0, 0, 1, k, 0, 1 is equal to plus minus 6. Now we expand it along the second row. So it is minus 1. Leave out second row and third column. That is 0 minus 3k is equal to plus minus 6. So 3k is equal to plus minus 6. So k is equal to plus minus 2. So this coordinate C or the value of k will be plus minus 2. k की वैल्यू प्लस 2 भी हो सकती है और माइनस 2 भी हो सकती है, यानी ये हमारा कोऑर्डिनेट 2, 0 भी हो सकता है या -2, 0 भी हो सकता है.